वेलकम टू हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बाबद जो देखा आस्पेरिजिलस प्रोटीएजेस और लाइपेजेस बाबद। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन्ते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बाबद। सो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बाबद आम देखा जे आस्पेरिजिलस एवं प्रोटीएजेस एवं लाइपेजेस बाबद। तो ये आस्पेरिजिलस हो कि प्रोटीएजेस बा लाइपेजेस जो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स गुड़ाक विशेष करके जो आम आर्टिफिशियली जो प्रोडक्शन कर विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकिन जो प्रोड्यूस होची एंजाइम्स गुड़ाक जोड़ाक नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो ता छड़ा आम जदि कमर्शियली जो प्रोड्यूस कर इंडस्ट्रियल एंजाइम्स जोड़ाक विशेष करी आमर विभिन्न प्रकार इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल रही है लिंक रे रही है। जमती कि जो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स गुड़ाक विशेष करके सब से इंडस्ट्री रिलेटेड आउ किसी इंडस्ट्री डिपेंड करते। So industrial enzymes are enzymes that are commercially used in a variety of industries such as pharmaceuticals, chemical production, biofuels, food and beverage and consumer products. इंडस्ट्रियल एंजाइम गुड़ाक विशेष करके आमर जो कमर्शियली यूज पाई विशेष करके आम यूज कर कमर्शियली जमती कि विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री रोचे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल प्रोडक्शंस, बायोफ्यूएल्स, फूड बेवरेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये सब आमर इंडस्ट्रियल एंजाइम्स रिक्वायरमेंट रोचे। So due to advancement of in recent years, biocatalysis through isolated enzymes is considered more economical than use of whole cells. तेणु जी isolated form enzyme is more economical, more effective than the use of whole cells. So enzymes may be used as a unit operation within a process to generate a desired product or may be the product of interest. तेणु एंजाइम्स गुड़ाक विशेष करके यूनिट ऑपरेशन पाई बा विदिन ए प्रोसेस टू जनरेट डिजायर्ड प्रोडक्ट पाइबापी बा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाइबापी एंजाइम ही सबुठारु माने कोन बेस्ट थिंग टू प्रोड्यूस द सच थिंग्स। So with the advancement of technology, novel enzymes with wide range of applications and specificity have been developed. So new application areas are still being explored. So there are some enzymes, industrial enzymes, which are discussed as below, that is aspergillus, proteases एवं lipases बाबद। सो आस्पारिजिलस बाबद जो देखा जी आस्पारिजिलस अराइजा जो गोटे फंजी रही है फंगस रही है सी फंगस रु ही या डिराइव कराई थे। तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड स्टार्टेड 100 years ago in 1894. So with the patent of Tarkarin on production of alpha amylase from Aspergillus oryzae। तो ये जो आमर ये पखापाखि आम देखा जदि माइक्रोबियल एक्सप्लॉयटेशन एंजाइम प्रोडक्शन पखापाखि 100 years एगो आरंभ है जोटा कि 1894 रु एवं जोटा कि पेटेंट कराइला ऑफ तारकाराइन जोटा कि अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन कराउतला फ्रॉम आस्पेरिजिलस ओराइजे। So aspergillus is the major source of enzymes for use of food and beverage manufacturing। तो ये को फूड और बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग पे विशेष करके यूज करा जाए। aspergillus enzymes are used for such diverse applications as starch processing, cheese manufacturing, juice elarification, brewing, dough conditioning, wine production, फूड प्रिजर्वेशन एंड इनस्टांट टी प्रोडक्शन। तेणु एमती विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री अच्छी जी कि आस्पेरिजिलस एंजाइम उपर बहुत मात्रा डिपेंड करते जोटा कि जुइस इलारेशन, ब्रूइंग, डो कंडीशन, वाइन प्रोडक्शन। तो एमती विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री अच्छी जो मैंने कि कौन करते डिपेंड करते ये प्रकार एंजाइम उपर। सो हाउएवर देयर आर एरियाज वेयर आस्पेरिजिलस apparently cannot work. For example, whenever pH requirements are alkaline as in detergents or temperature requirements are
well above 60 degree centigrade as in starch liquefaction। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର pH ର ଲେଭେଲ ହାଇ ହେଇଯାଏ, ଆଲକାଲାଇନ୍ ହେଇଯାଏ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସ୍ପାରିଜିଲସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆସ୍ପାରିଜିଲସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସୋ ମୋର ଓଭର aspergillus seems not to be a good source to cellulitic activity। ସେଲୁଲାଇଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫଳପ୍ରଦ କୌଣସି ବା ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ନୁହଁ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆସ୍ପାରିଜିଲସ୍ ବାବଦରେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ବାବଦରେ। So proteases are enzymes which catalyze the hydrolysis of peptide bonds present in between proteins and polypeptides। प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड भितर जो अमीनो एसिड भितर जो पेप्टाइड बॉन्ड अच्छी से पेप्टाइड बॉन्ड को भांगा काम है कारण प्रोटीएजेस काम। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन ए डिटर्जेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, विशेष करके डिटर्जेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विशेष करके यूज करा जाए। सो फॉलोड बाय फूड इंडस्ट्रीज, दे रिप्रेजेंट 60% of the industrial enzymes on the market। पाखापाखि 60% रेंज रे इंडस्ट्रियल एंजाइम यूज करा जिबार देखा जाए। सो द ग्लोबल डिमांड for protease enzyme market has been growing at a compound annual growth rate that is 5.3 during the period of 2014 to 2019। so their demand is expected to increase further as they find the application in a leather processing as well as bioremediation process। ତେଣୁ यार यूजेस आहरी बढ़िला को कारण जो ना ड्यू टू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस आउ लेदर प्रोसेसिंग पई या को बहुत मात्रा रे यूज करागला। सो प्रोटीजेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, catalytic activity and nature of the reactive group in the catalytic site। so the major sources of protease enzyme are animals, plants and microbes, so both bacterial and fungal। so proteases are divided into two groups that is based on the site of action of the polypeptide chains। जो जो पोजिशन रे बा साइट रे से एक्टिवेट होता है बा कट करता है, तो सी अनुଯାयी आम प्रोटेजेस को दुई भाग विभक्त करूँ। गोटे है एक्सोपेप्टिडेज आ गोटे है एंडोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज है जोटा कि प्रोटीन बा पॉलीपेप्टाइड एंड रे कट करथो, बाहर कट करथो, ताले एक्सोपेप्टिडेज एवं एंडोपेप्टिडेज है जोटा कि रेंडमली कौन सी भी माने माने कौन प्रोटीन रो मझी रे कोठी ना कोठी से कट करथो, ताकू एंडोपेप्टिडेज हम कहता। सो the exopeptides act on the ends of polypeptide chain and endopeptides act randomly in the inner regions of the polypeptide chains। Similarly, endopeptides are the further classified into 6 groups based on the catalytic residue present in the active site। तेणु जो एंडोपेप्टाइड्स को पुणी आम 6 भाग में विभक्त करछे कौन मैंने सी पर्टिकुलर जो जगह रे जदि मनकर सेराइन पाखे काटबो ताले सेराइन प्रोटीएज, एस्पार्टिक प्रोटीएज, सिस्टाइन प्रोटीएज, मेटालो प्रोटीएज, जेमति ग्लूटामिक एसिड प्रोटीएज, थियोनाइन प्रोटीएज, एमती विभिन्न प्रकार तार कैटालाइटिक एक्टिविटी कैटालाइटिक साइट रे कट अनुଯାयी ताको आमे ए प्रकार एंडोपेप्टिडेज को आमे एंडोप्रोटीएज को में डिवाइड कर पारथो। So the plant proteases such as bromelain, phycin and papain are widely used in food industries for various applications such as brewing, tenderization of meat, coagulation of milk and as a digestive acid माने digestive aids भाव में use ताको करा जाए। So in addition, proteases are also used to improve the flavor, nutritional value, solubility and digestibility of food as well as to modify their functional properties including coagulation, emulsifications। तो जो coagulation एवं emulsification process ପାଇଁ ମଧ୍ୟ याको यूज करा होची। यार हमर कोन विभिन्न प्रकार फूड रो फेवरेबल माने फ्लेवर प्रोड्यूस करिया ପାଇଁ यूज करा होची। न्यूट्रिशनल वैल्यू ମଧ୍ୟ बढ़िया ପାଇଁ ମଧ୍ୟ व्यवहार करा जायते। So proteases are widely used in baking industry
बेकिंग इंडस्ट्री केस रे वाइडली यूज करा जाए जो फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बेक्ड फूड एंड क्रैकर्स एंड वाफल्स। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ଫୁଡ୍ସ କ୍ରାକର୍ସ ୱାଫେଲ୍ସ ତ ବ୍ରେଡ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିଜେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। So these enzymes are used to reduce to the mixing time and decrease the dough consistency and uniformity, regulate the gluten strength in bread and to improve the texture and flavor। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ୟାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଫ୍ଲେଭର ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରେଡ୍ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। So acidic fungal proteases are used in improving fermentation of beer as they are efficient even at a low pH by balancing the amino acid profile of beer। ତେଣୁ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିୟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଯିଏକି ତାର ଯେଉଁ ଲୋ ପିଏଚ୍ରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। So another major application of proteases is associated with dairy industry। Dairy industry case they are used for acceleration of cheese ripening to modify the functional properties and reduce to the allergenic properties of milk products। So in cheese making proteases are also used to hydrolyze the specific peptide bond to generate paracasin ଏବଂ micropeptides। ତେଣୁ ଚିଜ୍ ମେକିଂ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରୋଟିଜେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ପାରାକେସିନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ବାବଦରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇପେଜେସ୍ ବାବଦରେ। ଯେ ଲାଇପେଜେସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗ୍ଲିସେରୋଇଷ୍ଟର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜେସ୍। So they are ये सब क्लास ऑफ स्टोरेज स्टोरेजर ये सब क्लास गोटे एवं विशेष करिकी लाइपेज एंजाइम जी की जदि इन जनरल कहबा दैट इज लिपिड फैट को भांगी थाए विशेष करिकी। So lipases catalyze the hydrolysis of long chain triglycerides into a glycerides and fatty acids। So they are extracellular enzymes। They mainly produced by fungi like Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Penicillium, etc. Bacteria producing lipases include the species of Pseudomonas acromobacter and Staphylococcus। ये सब बैक्टीरियल बॉडी बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल बॉडी जो रही जमीक स्यूडोमोनास एक्रोमोबैक्टर सेमती स्टाफाइलोकोकस इथुरु सब आसଥାଏ। এবং যদি ଫଞ୍ଜି କଥା ଦେଖିବା दैट इज आस्पारिजिलस म्यूकर राइजोपस पेनिसिलियम এই सब थ्रू आसଥାଏ विशेष करके हमर लाइपेजेस। सो दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द स्टोमक। जदि हम नेचुरली देखिबा हमर स्टोमक रे रही थाए एंड pancreas of humans and other animal species in order to digest fat and lipid। फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करिया पे एमाने रही था। So microbial enzymes contribute to approximately 90% of the global lipase market। यदि microbial enzyme contribution कथा हम देखिबा ये पाखापाखि एबव 90% पाखापाखि मार्केट ग्लोबल मार्केट रे ये यूज होचे। So this enzyme finds application in various industries including food, biofuel, detergent and animal feed। तो फूड प्रिपेयरिंग पाई बायोफ्यूल प्रिपेरेसन पाई डिटर्जेंट एनिमल फीड ये सब प्रिपेरेसन पाई यार बहुत सारा एप्लीकेशंस रोचे। सो इट इज आल्सो यूज्ड इन लेदर टेक्सटाइल एंड पेपर प्रोसेसिंग application। So in the food and beverage industries lipases find major application in dairy baking fruit juice beer wine industries ये सब पाई मध्य बहुत मात्रा रे यूज करा जायते। सेमती commercially lipases are mainly used for flavor development ପାଇଁ use କରାଯାଏ in dairy products and processing of other food containing fats। So in alcoholic beverages such as wine the aroma can be modified using lipase। So microbial lipases such as lipase from Candida rugosa
So have many applications which cannot be made the chemical synthesis. So these lipase find application in the production of ice cream, single cell protein, carbohydrate ester, and amino acid derivatives. So in addition to this, lipase could also be used in the processing of different waste streams. विभिन्न प्रकार waste stream को न्यूट्रलाइज करने ताको मध्य यूज करा जाए, जोटा कि आम फूड इंडस्ट्री विशेष करके आसते दैट आर रिलीज फ्रॉम फूड इंडस्ट्रीज. तो ये देखले आम प्रोटीज ये लाइपेजेस बाबद रे. तो ओवरऑल ये आम डिस्कस कले जेहेतु एप्लिकेशन पार्ट आमर इंडस्ट्रियल एंजाइम रे देखले जे किभଳି ଭାବରେ ଆସ୍ପାରିଜିଲସ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ଏବଂ ଲାଇପେଜେସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍. ତ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.